Hello, this is Mohammad Yasir Arafat and we are discussing O-Level Physics 5054. Now we will be discussing our last topic of chapter number 1, that is units and symbols. Units or symbols को define करने से पहले must know that units only defines as a type of physical quantity that we measuring. It also defines us the dimension of a physical quantity. Just like we are having some physical quantities like distance, displacement, height, width, radius, diameter. Such physical quantities has single dimension that is named as length. So इनके length same होने की वजह से इनका dimension same होने की वजह से we are using same physical quantities unit for all of these physical quantities. So all of such things can be determined by using or by understanding base quantities. जिसमें we can say that base quantities basically consist of 7 physical quantities by using which we can define other physical quantities like speed, acceleration, force, momentum, and many more. So before that, हमें मालूम होना चाहिए कि first physical quantity है length that has a unit of meter, mass that has a unit of kilogram, time that has a unit of seconds, temperature that has a unit of Kelvin, amount of substance that has a unit of mole, current that has a unit of ampere, intensity of light that has a unit of candela. So remember one thing, that by using all of these 7 quantities we can define some other physical quantities जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज. अब ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने में सबसे पहले हमारे पास है फोर्स. Force can be calculated by using F is equal to mass into acceleration, whereas mass is a base quantity and acceleration also consists of 2 base quantities that has a distance and time. So हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे इन फोर्स के लिए यूनिट ड्राइव करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे. अब कैसे यूज़ करेंगे उसको हम देखते हैं. Just like area has a formula for length into breadth, जिसका अदर फार्मूला पाई आर स्क्वायर. Volume has a unit of equation for length to breadth into height. और अदर फार्मूला जिसको किसी भी किस्म में स्फेयर के लिए जो यूज़ करते हैं हम वो है 4/3 पाई आर क्यूब. अब एक चीज़ याद रखो, हमेशा जब कभी भी यूनिट ड्राइव करना हो हम हमेशा ड्राइव क्वांटिटीज़ की यूनिट ड्राइव कर सकते हैं, बट डेरिवेशन ऑफ द यूनिट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू. अब क्योंकि यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है बेस क्वांटिटी से हमें अंडरस्टैंड करने के लिए वी आर सॉल्विंग यूनिट्स फॉर द ड्राइव क्वांटिटीज़. You need to memorize the table that is given with your syllabus, which has all the SI unit for base and drive quantities with their symbols. So, अब सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि when you are using the equation for force, जिसमें मास का जो यूनिट बनता है वो kg बनता है और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. kg into meter per second square is equivalent to the Newton. सिमिलर वे में अगर हम एरिया को देखें, एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था हमारे लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ हैज द सेम डायमेंशन, सो इसकी वजह से हम लेंथ और ब्रेथ के लिए दो सेम ही जो है यूनिट यूज़ करें जो कि मीटर्स हैं. देन मीटर्स गेट मल्टीप्लाइड बाय मीटर, इट विल गिव अस मीटर स्क्वायर. When we were solving pi r square, whereas pi is a constant number, it has no unit, but radius has the same dimension as the length. That is why we are using meter as the unit for the radius and the square applied on the meter by default as it was given in the equation.
ठीक इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला देखते हैं जो कि फाइंड आउट करने के लिए गिवन है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, जिसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल हैज द सेम यूनिट। सो यहाँ पे मीटर्स, लेंथ के यूनिट यूज़ किया गया मीटर्स इंटू मीटर्स, जो कि मिलता है हमें मीटर क्यूब। सिमिलरली जो है सेकंड इक्वेशन है दैट इज डिफाइनिंग अस 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या कांस्टेंट नंबर है, दैट इज वाई इनका यूनिट जो है वो होगा मीटर क्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।